Hello everyone, how are you all? This is our mission 100. Or in this mission 100, we will solve some MCQ, fill-ups, very short question answer in the part 1. Okay, these are important, very short MCQ and fill-ups. Okay, now let's continue. Okay, this is the now. These are the MCQ. Okay, in section A, we have some MCQ मतलब it means 18 MCQ और वो आपके होंगे half marks के. Okay, now let's start. First is, what is the ovule of angiosperm plant technically equivalent to? किसके equivalent होगा वो? The answer is option C. What is the answer? Answer option C, megasporangium. Okay, now the next question is, what is mean by floriculture? What is the mean by floriculture? Floriculture का क्या mean है? Kneading the flower, cleaning of the flower, flower cropping या extracting honey. So what is the right answer? Option C, flower cropping. This is the right answer. Okay, now the next is, how much temperature is less in scrotal sac than the abdominal cavity? कितना होता है? ऑप्शन ए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस या 13 डिग्री सेल्सियस. तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. This is the right answer. Okay, now the next is, structural and functional unit of testis are. Testis की structural and functional unit, यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एपिडाइमिस या फिर मुलेरियन ट्यूब्यूल्स. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. दिस इज द राइट आंसर. ओके, नाउ the next question is, worm is क्या है? वेजाइना, यूट्रस, वॉल या क्लेटोरिस. तो व्हाट इज दिस? दिस इज द यूट्रस. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी, दिस इज द राइट आंसर. विच वन इज नॉन मेडिकेटेड आईयूडी? इसमें से कौन सा नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है? लाइपेज लूप, कॉपर टी, कॉपर 7 या फिर प्रोजेस्ट्रॉन. तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज lipase loop, option A. This is the right answer. Now, what is the movement of gene from one linked group to another called? तो क्या है? What is the movement of gene from one linked group to another called? तो this is inversion, replication, translocation या gene exchange. तो what is the right answer? Option C, translocation. This is the right answer. Okay, now the next is, the person is unable to discriminate between red and green color suffer from. वो किससे सफर करता है? कलर ब्लाइंडनेस, स्मेलकीटोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन ए, कलर ब्लाइंडनेस. दिस इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which among the following is called polynucleotide enzyme? Which among the following is called as polynucleotide enzyme? Option A, polymerase A. Option B, polymerase second. Option C, ligase या फिर option D, ribonuclease. So what is the right answer? Option C, ligase. This is the right answer. Now next, identify the correct order of genetic material of organism starting from the largest to the smallest. This is option A, genome, chromosome, nucleotide, gene. Genome, chromosome, gene, nucleotide. Chromosome, genome, nucleotide, gene या chromosome, gene, genome, nucleotide. So what is the right answer? Option B. This is the right answer. Genome, chromosome, gene,
nucleotide. This is the right answer. Now, the next question is, where does genetic drift occur? So, where does genetic drift occur? In non-reproducing population, in slowly reproducing population, in small isolated population, in large isolated population. So what is the right answer? Option C. This is the right answer, in small isolated population. Now, the next question is, which of the following proteins do virus infected cells secreted? So, which of the following protein do virus infected cells secreted? Interferon, trichophyton, epidomyophyton, या clustrum. So, what is the right answer? The right answer is option A, interferon. This is the right answer. Okay. Now, the next is, which tumor generally remains limited to its original location? Beginning tumor, malignant tumor, intractable tumor, yeah, none of these. So what is the right answer? This is the option A, beginning tumor, benign tumor. The conversion of milk into curd leads to the increase of what good nutritional value? Vitamin B12, vitamin A, विटामिन डी, या फिर विटामिन ई. तो कन्वर्जन ऑफ मिल्क के अंदर कौन सा होगा? विटामिन B12. नाउ द नेक्स्ट इज, now the next question, which of the following is a restrictional endonuclease? इसमें से कौन सा restrictional endonuclease है? तो ऑप्शन ए, डीएनए फर्स्ट, आरएनए या हिंड सेकेंड, या प्रोटीएज. तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन सी, हिंड सेकेंड. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज, एनुअल माइग्रेशन इज नॉट फाउंड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग. तो एनुअल माइग्रेशन नहीं मिलेगा एनी वन ऑफ द फॉलोइंग. किसमें नहीं मिलेगा? ऑप्शन ए, सैल्मन, ऑप्शन बी साइबेरियन क्रेन, ऑप्शन सी सैलामेंडर, या फिर ऑप्शन डी आर्कटिक टर्ड. व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी, salamander. This is the right answer. Now the next is, the connecting link between abiotic and biotic component is an ecosystem is inorganic substance, food web, organic substance, या trophic level. So what is the right answer? The right answer is option C, organic substance. Now the next is, at which level do herbs and grass resides? तो वर्टिकल लेवल होगा, ऑब्लिक्यू लेवल होगा, ग्राउंड लेवल होगा, या अपर लेवल होगा. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी, ग्राउंड लेवल. दिस इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट, these are fill in the blanks. The first is, releasing of ovum from mature follicle is called. So this is called ovulation. तो इसे हम क्या कहेंगे? This is known as the ovulation. Ovulation is induced by hormone name. कौन से हार्मोन से होता है? LH and FSH. What is the right answer? LH and FSH. Now, सहेली contraceptive pills was invented by, किसके थ्रू हुई थी? CDRI. तो किसके थ्रू हुई थी? CDRI, Central Drug Research Center Institute. Okay. Now the next question is, first to make recombination frequency map. First to make कौन सा होगा? Struvant.
Okay, now nucleosomes are found from octamer end. तो nucleosomes are found from histone. तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट में क्या आ जाएगा? हिस्टोन. ठीक है. एंड द सेकेंड इज डीएनए. तो किसका है न्यूक्लियोसोम? किस किस से मिलकर बना है? हिस्टोन और डीएनए से. Stanley Miller obtained a mixture of amino acid in a flask at the end of this experiment. कौन सा एक्सपेरिमेंट के एंड में उन्होंने कौन सा मिक्सचर किया था? This is the glycine and alanine. Glycine and alanine. Okay, now the next is the first living being to emerge during the origin of life were. तो क्या है? This is the host. Next, antibiotic called penicillin is obtained from fungus. किससे मिली है? Penicillium notatum. तो क्या हो जाएगा? Penicillium notatum. Okay, now next, DNA is stained with to be seen under electrophoresis. तो डीएनए को हम किससे स्टेन करते हैं? इथिडियम ब्रोमाइड. इथिडियम ब्रोमाइड. Okay, now the technique used to amplify beneficial gene is. तो कौन सी टेक्निक है? This technique is known as the PCR. Okay, so what is the right answer? PCR. This is the right answer. Now, very short question answers. Now, the first question, if no nutritive substance are secreted by the surface of stigma, what will be its effect on fertilization? तो क्या होगा? Germination will not occur. क्या नहीं होगी? Germination will not take place. Germination will not take place. ठीक है. क्या नहीं होगा? जर्मिनेशन नहीं होगा. Which hormone is found in oral pills? कौन से हार्मोन ओरल पिल्स में मिलते हैं? These are the estrogen and progesterone. ठीक है. This is the comma, estrogen and progesterone. Okay, now what is the point mutation? तो पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है? बेसिकली इसमें हमारा जो है जीन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. तो यहां पर हमारा जीन स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. और क्यों चेंज होता है? ऑल्टरनेशन ऑफ न्यूक्लिक मेम्ब्रेन. तो क्यों जो नंबर होता है, जो सीक्वेंस होता है, टाइप जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है, नंबर होता है, उसमें क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. ठीक है. विच ट्रेट Okay, now the next, which trait of the pea plant were considered by Mendel? तो कौन से ट्रेट थे? Contrasting character. Contrasting characters. Okay. What caused swelling in the leg of person suffering from filarious? तो यहाँ पर किसकी वजह से होता है? Filarial worms.
ठीक है. The next is write the name of bacteria which convert milk into curd. So this is the lactic acid. Okay. Now next, who produced Bt toxin protein? किसने प्रोड्यूस किया था? Bacillus thuringiensis. Okay, this is the Bacillus thuringiensis. Which part of the body get infected in pneumonia? तो कौन सी part of the body? Alveoli or alveoli of lungs? So this is the alveoli of lungs. ठीक है. Now the next is some organism reproduce only once in their lifetime. Give two examples. तो कौन से हो सकते हैं? सैल्मोनम, अभी हमने एमसीक्यू में भी देखा था ये वाला एग्जाम. तो क्या है? सैल्मोन. और एक हो सकता है बैम्बू. Okay, give any two example of organism in which large size offspring are produced in less number. तो कौन सा होगा? ऑयस्टर. ठीक है. ऑयस्टर एंड पैलेजिक फिश. Okay, now the next is, now these are the another model paper MCQs. Okay, now the first is, in angiosperm double fertilization is required for the formation of. तो इसमें इन एंजियोस्पर्म में जो डबल फर्टिलाइजेशन है इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ. किसके फॉर्मेशन के लिए है? इंटेगुमेंट, एंडोस्पर्म, कोटिलीडन या एंडोकार्प. व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी, एंडोस्पर्म. नाउ द नेक्स्ट, of which plants were the seeds obtained from Arctic tundra? तो कौन से आर्कटिक टुंड्रा से मिलते हैं? ल्यूपाइन, फिनॉक्स, डैक्ट्रियालाइफेरा या पाइनस. तो ऑप्शन ए, दिस इज द राइट आंसर, ल्यूपाइन. नाउ द नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा इज आर. क्या फंक्शन है? न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन या ऑल ऑफ द अबव. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑल ऑफ द अबव. Now, the next is, after a month of pregnancy in human, the organ developed in embryo is. तो कौन सा organ develop होता है? Heart, limbs and fingers, hair या external genitalia. So what is the right answer? Option A, heart. This is the right answer. Now the next is, for how many days occur bleeding during menstruation cycle? तो कितने डेज की होती है ड्यूरिंग मैस्टुरेशन साइकिल? ये मैंने आपको पहले अभी जो हमने PYQ भी सॉल्व किए थे कुछ, उसके अंदर भी बताया था. 10 to 15 days, 3 to 5 days, 20 to 25 days, none of these. What is the right answer? Option B, 3 to 5 days. Okay, now the next, in case where woman cannot produce egg, a method is used to which eggs are taken from the uterus and transfer into fallopian tube of those women. This technique is called. So this technique is ZIFT, ART, ET या फिर ZIFT. तो कौन सा होगा? GIFT. तो what is the right answer? GIFT. ठीक है, gamete intrafallopian tube. Now the next is, now the next question, genes showing codominancy have alleles that are recessive to each. भाई जो कोडोमिनेंसी है, तो जीन जो शो कर रहे हैं कोडोमिनेंसी,
तो कोडोमिनेंसी उसमें क्या होगा, alleles that are recessive to each other, both alleles appear independently in heterozygous gamete, one gene is dominant over the other, या फिर alleles are linked to the same chromosome. So what is the right answer? Option C. Codominance, one gene is dominant over the other. ठीक है? Now the next is, in polygenic inheritance, the example of effect of environment is human skin color, Down syndrome, phenylketonuria, या फिर Klinefelter syndrome. So what is the answer? This is the option A. Human skin color. The two subunits of ribosomes join at the critical level of which ion? कि two subunits ribosome join at the critical level of which ion? कौन से ion में होती है? Magnesium, calcium, copper या manganese. So what is the right answer? Option A. Magnesium. This is the right answer. Now, the next is, how many base pairs are present in haploid DNA of human being? तो कितने base pairs present होते हैं? 5.5 into 10 to the power 7, 4.6 into 10 to the power 6, 3.3 into 10 to the power 9 या 6.3 into 10 to the power 8. So what is the right answer? 3.3 into 10 to the power 9. This is the right answer. The common origin of human and chimpanzee is best demonstrated by, तो किसके थ्रू डिमोन्स्ट्रेट होते हैं? क्रोमोसोम नंबर, स्कल कैपेसिटी, बायनोक्यूलर विजन या फिर डेंटल फॉर्मूला. व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी, स्कल कैपेसिटी. हेल्पफुल इन डिस्ट्रॉइंग ट्यूमर, Y इंटरफेरॉन, X इंटरफेरॉन, Z इंटरफेरॉन या फिर B इंटरफेरॉन. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन E, Y इंटरफेरॉन. Now the next is, a mass of malignant tumor is called, malignant tumor is called contact inhibition, neoplastics, ELISA enzyme या immunoassay. So what is the right answer? The right answer is neoplastic. Okay, now the next is, the bacteria used in biogas plant is methanogen bacteria, nitrifying bacteria, amino acid bacteria या denitrifying bacteria. तो what is the right answer? कि क्या होगा यहाँ पर हमारा? The right answer is methanogen bacteria. Okay. Now the next is, plasmid commonly used for gene transfer in dicotyledonous is PBR 322, PBR 235, TI plasmid या फिर cosmid. So what is the right answer? Option C, TI plasmid. This is the right answer. Now, the next question is, homeostasis is क्या है? Tendency to change with environmental change, tendency to resist change या फिर disruption in regulatory control, use of plant and animal extract in homeopathy. So what is the right answer? Option B, tendency to resist change. Now next, what is obtained by subtracting the losses during respiration from gross primary productivity? So what is the answer? Secondary productivity, primary, tertiary या net primary productivity? What is the right answer? Option D. What is detritus made up of? किससे बनकर बनते हैं? Flower and dead remain, leaves, bark and faces या all of the above? Option D, all of the above. Now, these are the fill in the blanks. Now, the first sperm formation takes place in the
कहां पर होगा? टेस्टिस. What is the right answer? Testis. The structure forming vascular contact between embryo and uterus is called. So this is called placenta. Okay. Now the third is reproductive health means health of the all aspects of reproduction life. तो कौन सा होगा? फिजिकल, इमोशनल. ठीक है, तो व्हाट इज द राइट आंसर? फिजिकल and emotional. Okay, now the next, the progeny reproduced by marriage of a normal male and hemophilic female will be have hemophilia. So will be 0. Okay. Now the next is the process of formation of RNA from DNA is called, and the synthesis of protein from RNA is known as the. So RNA का formation, this is the transcription. Okay, and the formation of protein from RNA, this is the translation. Okay, now the next is the homology in the bones of the forelimbs of whales, bats, cheetahs and human reflected evolution. कौन सा evolution है? Conversion या divergent? Divergent. What is the right answer? Divergent. Divergent evolution. Darwin finches are the best example of. किसका होता है? Darwin finches सबसे common है adaptive radiation. So what is the right answer? Adaptive radiation. Now, next is a genetical engineered microbial species successfully used in bioremediation of oil spills? So this is the, what is the right answer? Pseudomonas. What is the right answer? Pseudomonas. Okay, now the next is the process of separating the separate strip of DNA by cutting from agarose gel is called. This is the elution. Okay, now the part of the tobacco plant is infected by Malodism ecognitia. The part is root. Okay, root वाला part इफेक्ट होता है. Now these are the very short question answer. Okay, write the reason of preserving the pollen grain as fossils. क्यों प्रिजर्व करते हैं? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन. किसकी वजह से हम करते हैं? स्पोरोपोलेनिन की प्रेजेंस की वजह से. जो कहां पे होता है? एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन. तो हम लिख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन. प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन. ठीक है, कहां पे होता है? इन एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन. ठीक है, नाउ एक्सपेंड द टर्म ऑफ आईयूडीसी. तो आईयूडीसी क्या हो जाएगा? इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. ओके, नाउ व्हाट इज एलील? एलील क्या है? टू ऑल्टरनेट टाइप ऑफ सेम जीन. ठीक है, तो व्हाट इज एलील?
two alternate type of the same gene. ठीक है. Now explain the term phenotype. Phenotype क्या होता है? What is the term phenotype? What do you mean by phenotype? तो phenotype morphological experience, जो एक्सप्रेशन जो हो रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल जो एक्सप्रेशन हो रहे हैं, these are known as the phenotype. तो हम क्या निकालते हैं? जीनोटाइप एंड फिनोटाइप. तो फिनोटाइप मतलब मॉर्फोलॉजिकल जो एक्सप्रेशन है, दिस इज नोन एज द फिनोटाइप. Morphological expression. Now, some allergens trigger sneezing and gasping. What cause this type of lack of response in the body? तो कौन सा कॉल करता है? एलर्जी. तो दिस रिएक्शन बॉडी कॉल एलर्जी. Okay. Now, the next is, which fungus is responsible for the production of cyclosporin A? तो cyclosporin A के लिए कौन सा है फंगस? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मा. ट्राइकोडर्मा sporum. Okay. Now the next is, name the appropriate medical system for the treatment of a child suffering from the genetic disease. So what is the answer? Gene therapy. The right answer is gene therapy. Okay. Now write the full name of LSD. Lysergic. यहाँ है lysergic acid diethylamide. Okay. What is the डार्विनियन एबिलिटी? क्या है डार्विनियन एबिलिटी? कि हैबिटेट लिव, कि इसके अंदर स्पीशीज टू रिप्रोड्यूस इन द हैबिटेट. ओके. क्या है हमारी यहाँ पे डार्विनियन एबिलिटी? कि स्पीशीज टू रिप्रोड्यूस इन द हैबिटेट they live is called Darwinian ability. How are predator important? Predator कैसे important होते हैं? वो अंडर कंट्रोल, वो किसको कंट्रोल करते हैं? पॉल्यूशन को. ओके. तो वो आपका आ जाएगा वर नो, ये वेरी हाई एंड इकोसिस्टम वुड बिकम अनस्टेबल. क्या होता है? पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, अनस्टेबल होते हैं. तो हाउ आर प्रीडेटर इंपॉर्टेंट? वो क्या होगा? दे वर नो प्रीडेटर, द पॉपुलेशन डेंसिटी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ऑफ प्रे स्पीशीज would become very high
ठीक है, एंड इकोसिस्टम would become unstable. Okay, now this is the predator importance. Now the next is, these are the MCQ questions of another model paper. Okay, now let's start. The first question is, attractants and rewards are required for anomorphily, entomomorphily, hydromorphily या फिर celestogamy. What is the right answer? Option B, entomorphily. This is the right answer. Now the next is, the example of celestogamy is, जो example है celestogamy का क्या है? वॉयला, मिराबिलस, पपाया या ग्लोरियोसा. So what is the right answer? The example of celestogamy. The next is, the beginning first menstruation of menstruation at puberty is called. This is called menarche, menopause, organism या cryptocytism. So what is the right answer? The right answer is menarche. Okay, क्या होता है? प्यूबर्टी मैच्योरेशन जो बिगनिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? menarche. और जो एंड होता है उसे हम क्या कहते हैं? menopause. Now the next is, which fertilization technique would be appropriate for a couple whose male has a very low sperm count? तो कौन सी टेक्निक यूज में आएगी? इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, बोथ ए एंड बी, या इंट्रासेल्युलर स्पर्म डिपोजिशन. व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी, both A and B techniques. Now the next is, genes located on Y chromosomes are, जो जीन Y chromosomes पे located हैं, तो genes located on Y chromosome are mutation gene, complementary sex linked gene, autosomal gene या Hollandrick gene. So what is the right answer? The right answer is option D, Hollandrick genes. Now the next question is question number 8. In which disease there occurs deficiency of one X chromosome, that is 45 chromosome XO is found? Turner syndrome, Klinefelter syndrome, Down syndrome या none of these. So what is the right answer? Option A, Turner syndrome. This is the right answer. Now the next is, if the sequence of nitrogenous base is one strand of DNA is ATCTZ, then what will be the sequence on the complementary RNA sequence? तो यहाँ पर कि क्या है complementary RNA sequence? देखो ATCTG, ठीक है, और RNA में हमें पता है कि थाइमिन की जगह कौन बाइंड करता है? यूरेसिल. थाइमिन की जगह कौन बाइंड करेगा? यूरेसिल. तो ए की जगह कौन बाइंड करेगा? यू. तो आप देख लो स्टार्ट कहां से हो रहा है? यहां से हो रहा है यू. तो कौन बाइंड करेगा? यू. टी से कौन बाइंड कर रहा है? ए. सी से जी, फिर टी से ए, जी से सी. व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी, दिस इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट इज डी, दिस इज द right answer. Which of the following in Miller's experiment caps and CH4? Blood corpuscles, the HIV undergoes replication and produce progeny viruses.
तो व्हाट इज द राइट आंसर? TH cells, B lymphocytes, basophils या eosinophils? So what is the right answer? Option A. This is the right answer. TH cells. Natural cannabinoid is obtained from which part of the Cannabina sativa plant? तो कौन सा है? Root, inflorescence, leaves या stem? What is the right answer? Option B. Inflorescence. The next is which of the following pair belongs to biofertilizer? कौन सा belong करता है? Azolla and BGA, Nostoc and Legume, Rhizobium and grasses, या फिर Salmonella and E. coli? So what is the right answer? Option A. Azolla and BGA. This is the right answer. Which of the following vector is commonly used to insertion of DNA fragment into human lymphocyte? Lambda phase, TI plasmid, retrovirus या PBR 322? So what is the right answer? Option C. Retroviruses. This is the right answer. The board-based age pyramid show. The board-based age pyramid show. Age pyramid क्या show करता है? High percentage of elderly people, low percentage of youth, a stable population या फिर high percentage of youth? So what is the right answer? Option D. High percentage of youth. In which alternative pathway of flow of energy are found? Food web, food chain, ecological pyramid या biogeochemical cycle? So what is the right answer? Option A. Food web. The ecological pyramid which is generally studies in pyramid of number, pyramid of biomass, pyramid of energy, all of these. So what is the right answer? All of these. Now these are the fill in the blanks. The primary sex organ of man and that of the woman is. So common है. This is the testis, ovary. ठीक है. Sperms developing in testis are provided nutrition and protection by किसके थ्रू होता है? Sertoli cells. Releasing IUD कौन सा होता है? प्रोजेस्टर और एक होगा आपका LNG20. ठीक है. Now, to determine the genotype of the tall plant in F2, Mendel crossed the tall plant of F2 with a dwarf plant. This is called test cross. Okay. Now, the next is RNA soluble in 1.0 mole NaCl solution. तो कौन सा RNA होता है? Translation. Okay. Now, the next is the two important key concept of Darwinism are and. तो two concept कौन से हैं? Branching, descent. Okay, this is the one and second लिख सकते हैं natural selection. Okay, now the next is according to De Vries is the major cause of speciation. तो क्या है? Mutation. Is used for the production of ethanol at industrial scale. So this is the Saccharomyces cerevisiae.
The answer is Saccharomyces cerevisiae. The vector most commonly used for human genome sequencing is, कौन सा वेक्टर है? The vector, this is the Base and West. ठीक है. Enzyme are essential for the functioning of the immune system. कौन सा है? Adenosine, deaminase. Okay. Now, these are the very short question answers. The first is, which part of the flower forms the fruit? This is the ovaries. What is the marriageable age of for female and male respectively? तो obviously यहाँ पर आपकी अगर हम मैरिजेबल एज करें तो फीमेल की 18 हो जाएगी और मेल की 21. नेम द साइंटिस्ट हु रीडिस्कवर्ड द रिजल्ट ऑफ मैंडल्स इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेन. तो किसने करा था? डिवेरेस, कॉरेंस एंड शेनमार्क. कि मतलब कि जो आपके टी शेनमार्क थे उन सब ने इनको डिस्कवर किया था. What is the codominance? Explain with example. तो कोडोमिनेंस में प्रेजेंट इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट टुगेदर रहते हैं, जो दोनों ही इंडिपेंडेंटली टुगेदर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. इसके अंदर आपका जो ब्लड ग्रुप वाला है, जो आपके एलिन्स वाला, जो ये ब्लड ग्रुप के अंदर ब्लड ग्रुप ए बी, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस. ये आपके इसका एग्जांपल रहेगा. व्हाट इज कॉल्ड लिम्फॉइड ऑर्गन? लिम्फॉइड, पहले एक और ये क्वेश्चंस रह गए हैं, पहले हम इन्हें करेंगे. ठीक है. तो बेसिकली टेल वन इफेक्ट इट वाज ऑन द बॉडी. तो दिस इज एक्यूट नार्कोटिक ड्रग. ठीक है. और ये किसको इफेक्ट करेगी? लेजीनेस करेगी. ठीक है. Name the microbes which is known as the vibrio yeast. Write its one uses. तो कौन सा है? Saccharomyces cerevisiae. ठीक है. ये भी हमने आगे भी किया था. ठीक है. और इसका क्या यूज है? vibrio yeast बनाने में, बेवरेजेस बनाने में हम इसको यूज में लेते हैं. ठीक है. फर्मेंटिंग में आ गया, सीरियल्स वगैरह में आ गया. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज, when the symptoms of the disease are not clearly visible for molecular diagnosis, then how is it identified? तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे यूज टू, हम यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं पीसीआर टेक्निक के थ्रू. हम कौन सी टेक्निक यूज में लेंगे? पीसीआर टेक्निक, जिसके थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Now, this is the what is called lymphoid organ. जो यहाँ पर जो lymphoid organ है, जो जीन होते हैं, ठीक है, वो मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन इज lymphoid टेक प्लेस. तो यहाँ पर क्या होता है? मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन lymphoid टेक प्लेस. ठीक है. These are known as the lymphoid organ. Mention any two important roles played by predation in nature. तो प्रीडेशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है? मेंटेन करते हैं फूड चेन को. मेंटेन करेंगे फूड चेन को. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैंग्रोव वेजिटेशन? तो मैंग्रोव वेजिटेशन आपको बेसिकली कोस्ट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल में मिलेगी. ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में.
ठीक है, वहां पर मिलेगी। रूट्स आर कॉल्ड न्यूमेटोफोर। यहाँ इसकी जो रूट्स होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर। और वो विविपेरस सीड जर्मिनेशन शो करती है। Okay, now the next is, this is the another model paper. Okay, so let's start. The first question: what is the process called in which sporophyte develops directly into gametophyte without meiosis? So what is the process जिसके अंदर directly develop होते हैं gamete without meiosis? So this is the apospory. 80% ऑफ पॉलिनेशन अकर बाय, 80% ऑफ पॉलिनेशन किसके थ्रू अकर होता है? बीज, बर्ड्स, बैट्स या स्नेल? तो ऑप्शन बी, बीज के थ्रू। स्पर्म्स हैड गेट एम्बेडेड इन आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो कौन सा होगा? स्ट्रोमा, पोलर सेल्स, सर्टोली सेल्स या थीका इंटरना? तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी, सर्टोली सेल्स। Now, the next is, which of the following accessories gonads is found only in male mammal? Prostate gland, pineal gland, Cowper's gland या Bartholin glands? So this is the option C. This is the right answer. Sperms are formed from the germ cells is male as a result of meiosis, mitosis, amitosis, and none of these. So what is the right answer? Meiosis. From where fluid is taken out in amniocentesis? From fetus blood, from mother's blood. Now, the next is, multiple alleles can control the inheritance of which of the following? So multiple alleles, phenylketonuria, color blindness, sickle cell anemia या blood group? तो आंसर क्या होगा? What is the answer? The answer is blood group. Which of the following ratio is generally constant for a given species? कौन सा होगा? The option B, G plus C upon A plus T. Now next, DNA fingerprinting identify variation at specific location in DNA sequence. What are these specific locations called? So these specific locations are called repetitive DNA. Which of the following is the correct order of human evolutionary history? So what is the right answer? Option C, picking man, Halitberg man, Neanderthal man या Cro-Magnon man. Choose the correct option for sexually transmitted disease. तो कौन सा correct option है? Gonorrhea, syphilis, genital herpes. Now, the next question is, which of the following is the primary lymphatic organ? इसमें से कौन सा प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन है? स्टमक, लीवर, बोन मैरो या लंग? तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी. The rate of uptake of oxygen by microbes in a sample of water is measured by. So this is measured by BOD test. At which of the following places does the restriction enzyme EcoRI cut DNA? So what is the right answer? Option GAA-TTC. When both the species are maturely benefited, this relationship is called, दोनों को benefit होता है तो this relationship is called mutualism. Now the next is, the rate of the production of biomass is called, कि जो biomass का है, this is the productivity. The process of modification of the environmental through the influence of living organism or successive plant community. So what is this? This is the reaction. Now fill in the blanks. The first is, provide energy as ATP to sperm. This is the fructose sugar.
Okay, now the next is fertilization in human occurs is ampulla of oviduct. Now, the next is sterilization in males is called and females called. तो मेल्स के अंदर क्या हो जाएगा वैसेक्टोमी, एंड फीमेल्स में हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी. Due to increases and decreases in DNA base pairs, mutation is produced. Mutation क्या produce करता है? Frame shift. Okay, now is called initiation codon and is called termination codon. तो कौन सा होता है? AUG. इनिशिएशन कोडोन हो गया और आपके हो गया UAA, UAG और UGA. These are the termination codon, also called stop codon. Okay, now the next is called the golden era of reptiles, Mesozoic era. Next is refers to the development in insect. This is the directional natural in insect. This is the directional natural selection. Selection. Term linkage and recombination. Who at the first prepared the recombination map? तो यहाँ पर आपके तो TH मॉर्गन हो जाएगा, ठीक है, ओके. और यहाँ पर जिन्होंने सबसे पहले रिकॉम्बिनेशन मैप दिया था वो स्टूडेंट हो जाएंगे जो हमने फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में भी किया था. नाउ from which plant is cocaine obtained and when country is the plant originally from? तो obtained from the, यहां से हम कौन से प्लांट से हम मिलता है ये obtained? This is obtained from pyroprozyme. ठीक है, कोका, ठीक है. यहां से तो हम इसको ऑब्टेन करते हैं, ठीक है. और किस कंट्री में? साउथ अमेरिका, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज ड्यू टू द whose efforts was the technology of biomass production developed in India. तो जो डेवलप बाय इफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट. Okay, now the next is what do you understand by soma clones? तो दिस इज द जो आपका ये सोमा क्लोन्स है, टिश्यू कल्चर है, ठीक है, अंडर द टिश्यू कल्चर. ठीक है. और जेनेटिक आइडेंटिकल प्लांट, जितने भी जेनेटिकल प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूस फ्रॉम एक्स प्लांट obtained from one plant. This is called soma clones. Write the name of the carrier bacteria responsible for चिकनगुनिया. तो यहाँ पर आपका जो है एडिस मॉस्किटो.
The next is what do you mean by ecological Niken of an organism? तो यहाँ पर होगा आपका कि the place of an organism, okay, in the biological environment and its role in the ecosystem. Okay, ecological Niken. This is known as the ecological Niken. What is sex ratio? तो यहाँ पर अगर हम मेल एंड फीमेल के रेशियो की बात करें तो मेंबर इन एनी पॉपुलेशन आर कॉल्ड सेक्स रेशियो. मेल हो फीमेल हो एनी पॉपुलेशन मेंबर की जो भी मेंबर पॉपुलेशन के होते हैं आर उनका जो रेशियो होता है दिस रेशियो इज नोन एज द सेक्स रेशियो. कि जो भी पॉपुलेशन में मेल एंड फीमेल का जो रेशियो होगा दिस इज नोन एज द सेक्स रेशियो. ओके, नाउ these are the some important questions जो हमने solve किए थे. fill up very short and MCQ. okay, all the best for preparation.